स्वरूप शांत शर्मणः नप्त्रे परशिव गोत्रोद्भवस्य सकल निष्कल स्वरूप मनोन्मणि रमण सदाशिव शर्मणः पौत्राय परशिव गोत्रोद्भवस्य सकल स्वरूप उन्मणि रमण महेश्वर शर्मणः पुत्राय श्री एकाम्रेश्वर शर्मणे वराय अपर शक्ति पराशक्ति परापर शक्ति त्रयार्षय प्रवरान्वित पराशक्ति गोत्रोद्भवस्य परञ्ज्योति शर्मणः नप्त्रीं
अपरशक्ति पराशक्ति परापरशक्ति त्रयार्षय प्रवरान्वित पराशक्ति गोत्रोद्भवस्य सरस्वती रमण चतुर्मुख शर्मण पौत्री अपरशक्ति परापरशक्ति मेनका रमण हिमवत् शर्मण पुत्री श्री पार्वती स्वरूप कामाक्षिम्बा नाम्नीं कन्यां परशिव परमेश्वर परञ्ज्योति परापर परमात्म पंचार्षेय प्रवरान्वित परशिव गोत्रोद्भवस्य निष्कल स्वरूप शांत शर्मण नत्रे परशिव परमेश्वर परञ्ज्योति सकल निष्कल स्वरूप मनोन्मणि रमण सदाशिव शर्मण पौत्राय ओम परशिव परमेश्वर परञ्ज्योति सकल स्वरूप उन्मणि रमण महेश्वर शर्मण पुत्राय श्री एकाम्रेश्वर शर्मणे वराय अपरशक्ति पराशक्ति परापरशक्ति त्रयार्षेय प्रवरान्वित पराशक्ति गोत्रोद्भवस्य परञ्ज्योति शर्मण नत्रीं अपरशक्ति पराशक्ति परापरशक्ति सरस्वती रमण चतुर्मुख शर्मण पौत्री अपरशक्ति परापरशक्ति मेनका रमण हिमवत् शर्मण पुत्री श्री पार्वती स्वरूप कामाक्षिम्बा नाम्नीं कन्यां परशिव परमेश्वर परञ्ज्योति परापर परमात्म पंचार्षेय प्रवरान्वित परशिव गोत्रोद्भवस्य निष्कल स्वरूप शांत शर्मण नत्रे सकल निष्कल स्वरूप मनोन्मणि रमण सदाशिव शर्मण पौत्राय सकल स्वरूप उन्मणि रमण महेश्वर शर्मण पुत्राय श्री रुद्र स्वरूपाय एकाम्रेश्वर शर्मणे वराय अपरशक्ति पराशक्ति परापरशक्ति त्रयार्षेय प्रवरान्वित पराशक्ति गोत्रोद्भवस्य परञ्ज्योति शर्मण नत्रीं सरस्वती रमण चतुर्मुख शर्मण पौत्री मेनका रमण हिमवत् शर्मण पुत्री श्री पार्वती स्वरूप कामाक्षिम्बा नाम्नी कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां लोकक्षेमं करोम्यादो शिवलोके जिगीषया कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां लोकक्षेमं करोम्यादो शिवलोके जिगीषया कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां लोकक्षेमं करोम्यादो शिवलोके जिगीषया
सद्यो मदमद्या गोजारतजाद्यजातं बृहत् सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु तथा शिवो ॐ ईशानमूर्धाय स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय स्वाहा अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ हुं अघोरहृदयाय स्वाहा ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलकरणाय नमो बलकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॐ ह्रीं वामदेवोक्ताय स्वाहा सद्यो जातं प्रपद्यां सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवश्रवां भगोद्धराय नमः ॐ हं सद्यो जातमूर्तये स्वाहा ओक्षरिकेभ्यो देवानागुपतयेभ्यो ॐ ह्रीं हृदयाय स्वाहा Our traditional wedding, this is how it happens. This is what is approved by our Shastras. For us, marriage is not a contract. Marriage is something much different from contract. When two lives come together, it is not two bodies coming together. It is two people who are personifying the divinity, they come together. Whatever we need to do in accordance with treating it with that divinity, we should do it in the marriage. The steps in the marriage, I am not going to talk about today because it is going to take a lot of time. But at least there are 3 or 4 steps. One is what they are considered very important. One is called this Kanika Dhanam. First question, children ask this, why should women should be given as dhanam? How can you give dhanam as a woman? It's a commodity, right? You cannot give dhanam as a woman. How this is given? And who is giving this? The father. To give Kanika dhanam, as much as he is so eager to receive a dhanam from another person for his son, he is very ready to give his daughter as dhanam to another family. Unless these families come together, you cannot proceed with respect to the locomotion of day-to-day world. Very important. So it is not dhanam like any other dhanam, like gift. It is considered dhanam because in Vedic scriptures, dhanam is considered extremely holy. To give something, what is dearest to me, I should give as dhanam. It is not buying something from a store and offering. Because that is where I now show that my attachment is not just to the being, to the whatever human value it is or anything else, but it is the most spiritual thing by which I leave my ego. And whatever is dearest to me, I have no more of those attachments anymore. I am giving it as dhanam. For what? Dharma praja abhivriddhyartham. For the generation of Dharma Praja. For us, Dharma is most important. That cannot happen unless a man and woman come together. And that has to happen only with the mutual understanding and sankalpa of both the parties. And he gives us dhanam, and that person, he takes it as dhanam. Look at that. The way you do is Kanyaga dhanam, they pour the coconut. Father pours the water. And even if it is King Janaka, he has to take it like this. Look at the way they have kept our women. There is a mantra, Samragni Bhava. You become the queen of my house. The boy requests her, you come to my family and you be the queen of this house.
Now people say, oh, this first day they came, she took the keys from the house and all. They are not figurative to talk all that. But this is the intent. Samrajni Bhava is a very, very powerful one. And this Kanyaka Dhanam is one. And then there are Mangalya Dharanam. It's all symbolic. Why should she alone have a Mangalyam? Why not the man can? So actually, this alone, once there was a marriage in the other temple, when I was looking after that temple also. And the girl called. Father was crying, girl was called. They are going to offer me as Dhanam. I don't want to be a Dhanam to somebody. The girl talked. And she said, they are going to tie this Mangal Sutra on me. I am not some cattle or something to be tied around some kind of a noose. These questions are very common in today's children. Because earlier, we accepted all these things as an osmosis process. The father did, grandfather did, great-grandfather did, we do the same thing. But here when you are exposed to so many diverse things, it is not possible to make them understand in that manner. But here we have to make them understand only by logic and also by the reality of the situation. Only a man and woman can come together only to develop progeny. Simple. After these days all kinds of marriages are, let's not worry about that. So this is first thing. And second thing is, to giving is a dhanam is not just some gift. This person who is accepting it with all humility, please offer it. Because Dharma Praja Vivrityartham, we want to create Dharma Prajas who are all good citizens, good individuals, good beings. We don't want just some category. Then the third thing is Panigrahanam. Panigraham is most important. Here shaking hands and all are very common before marriage, all kinds of things. Actually many priests used to say, don't go and shake hands on the boy or the girl. The Panigrahanam is an important ritual where the priest will say, hold all the 5 hands together. Not these 4 hands alone or this 1 hand alone. The names are this Tarjani, Madhyama, Anamika, Kanishtika, all are feminine names. If you hold all those 4 only, with the power of the mantras, you will get only female children. Or if you hold only this Kanishtika with this masculine, then you will get only a boy child. So hold all of them together, then only you will get both male and female children. You want both. Because as much you are interested in getting your son married, the other person is also interested in getting his son married and not married. You are also, this is parasparam. Nobody is individual here. So Panigrahanam is very important. That's why they will go and say, don't hold this way, that way and all, don't shake hands to these people. Because they are bound by the sankalpa of the marriage. And finally this Saptapati. These 7 steps they put. The prayers for each one of them. Ekam ishe, dve urje, trini vrataya, chatvari mayo bhavaya, panchapsubhyaham, shadritubhyaham, sapta saptavyo hotahabhyom, vishnutvahotrabhyo vishnutvanveto. Let Vishnu be following you in all each of the steps. I am praying for us to the family, for us to continue for so long, doing all the dharmic things in life. Dharmic things is not just only rituals. People immediately think dharmic means all these homas, rituals, pujas. No, our religion is unique. This is for register.
Panikena. We should have found out somewhere. Already done it. ஓம் பிரியம் பரம் விதாமஹே சுவர்க்கம் புஷ்டிவர்தனம் உர்வாரும் யுந்தனாத் பிரச்சோன்முக்ஷீயமாமதாத் ஷட்வாடு ஸ்மிதம் உக்ரவீரம் கிஞ்சஸ்வவேன பஞ்சசேன மத்யமிதம் பாதேன சஹாரேன ரக்ஷா न प्रोक्षदायदेन मन प्रागेनं प्रोक्षयच्छन्दमाज्येन प्रोक्षते तेन बोधत्तेन मे धत्तेन प्रोक्षितः सर्वावस्थानिरस्ते गुणनिकाक्षं समाह्याभ्यन्तरश्रुतिः अनन्तमीशानं समाह्याभ्यन्तरश्रुतिः भोर्भवस्व भोर्भवस्व भोर्भवस्वः Please. Thank you.
मधुवक्षामि मधुवदिष्यामि मधुपते देवेभ्यो वादन्त्य शोभागे पितरोडवदन्तो ऋणसमाधियतां समाहितमनस्वा प्रसिद्धभवन्तः प्रसन्नास्मा शान्तिः अस्तु पुष्टिः अस्तु तुष्टिः अस्तु आवेशमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अथर्वैश्वर्यमस्तु गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ऐशान्या भगते सर्वदर्शनमस्तु आज्ञया विद्वापरिपरिणमस्तु धर्मासुपराहन्तु सर्वसंयुक्तिधर्मास्तु माधवाक्षतां यत्पदं नक्षत्रं मण्डलर्गवेदो विष्णुविदामयसुरविदे नक्षत्रं नयने यागन्तयो
சுந்தரனை மணந்த சுடற்கொடியே சுந்தரனை மணந்த சுடற்கொடியே மதுரை சோமசுந்தர மணந்த மரபிரியே சுந்தரனை மணந்த சுடற்கொடியே மதுரை சோமசுந்தர மணந்த மரபிரியே சுந்தரனை மணந்த சுடற்கொடியே அந்தர துள்ளோரும் அகில உலகோரும் அந்தர துள்ளோரும் அகில உலகோரும் அரும்பதஞ்சலி வியாகிர அருந்தவரும் மகிழ அரும்பதஞ்சலி வியாகிர அருந்தவரும் மகிழ சுந்தரனை மணந்த சுடற்கொடியே கையிலை பெருமானின் கவி பெருகோலமதை கையிலை பெருமானின் கவி பெருகோலமதை கண்டவுடன் நாணம் கொண்டு நெய்வசம் இழந்தாய் கண்டவுடன் நாணம் கொண்டு நெய்வசம் இழந்தாய் அயனா சடங்கேற்ற அருமாகி வாழ அயனா சடங்கேற்ற அருமாகி வாழ ஆனந்த பொங்கிடும் ஞான முகத்தோடு ஆனந்த பொங்கிடும் ஞான முகத்தோடு சுந்தரனை மணந்த சுடற்கொடியே மதுரை சோம சுந்தர மணந்த மடப்பிடியே சுந்தரனை மணந்த சுடற்கொடியே 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 शिवशक्त्या युक्तः यैवशक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवः न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्मामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि यस्येवा विश्वा भवनानि सर्वाः सकर्तिकाभिरभिसम्पदानः अग्निर्नो देवस्तु विवेदधातु वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् पदे हर हर महादेव मीनाक्षम्बा माता की कामाक्षम्बा माता की ईश्वर स्वामी की जय सर्वेषां भक्तमहाजनानां सदर्शितबल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री कामाक्षम्बा एकाम्रनाथ स्वरूपाय मीनाक्षी सुन्दरेश्वर स्वामी दिव्य पादारविन्दयोः अष्टोत्तरशतनित्य नामार्चन पूजां करिष्ये सर्वेषामपि सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थम् आयुरारोग्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलप्राप्त्यर्थे भक्ताभीष्टबलसिद्ध्यर्थे शिवपादारविन्दयोः कामाक्षम्बा एकाम्रनाथ स्वरूपाय मीनाक्षी सुन्दरेश्वर स्वामी शरणारविन्दयोः नाम अष्टोत्तरशतस्य नामार्चन पूजां करिष्ये ॐ शिवाय नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ नीलोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपाणये नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ श्रीविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ शिवाप्रियाय नमः ॐ
कपालिने नमः ओम कामानरे नमः ओम अंधकासुरसूदनाय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः ओम कालकालाय नमः कृपानदरे नमः ओम भीमाय नमः ओम प्रदोहस्ताय नमः ओम मृगपालने नमः ओम जटाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरान्तकाय नमः ओम वृषाङ्काय नमः ओम वृषभारूढाय नमः ओम भस्मोद्धूलविग्रहाय नमः ओम सामप्रियाय नमः ओम सर्वमयाय नमः ओम त्रयीमूर्तये नमः ओम मनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओम भविषे नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्रेशाय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यदेवसे नमः ओम दुर्दर्शाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम मनखाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम भर्गाय नमः ओम गिरिधन्वने नमः ओम गिरिप्रियाय नमः ओम विद्यवासवे नमः ओम पुराराधरे नमः ओम भगवते नमः ओम प्रमदाधिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मतवे नमः ओम जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम महाशयजनकाय नमः ओम चारुविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम महिर्बुद्धियाय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्धविग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम खण्डप्रजवे नमः ओम अजाय नमः ओम पाशविमोचकाय नमः ओम मूढाय नमः ओम पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम भव्यक्ताय नमः ओम मरवे नमः ओम भोजदण्डविदे नमः ओम अभ्यग्राय नमः ओम दक्षाधरहराय नमः ओम हराय नमः ओम भगनेत्रविदे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपदे नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम धारकाय नमः ओम एकाम्बरेश्वराय नमः ह्रीं वामाय नमः ओम ह्रीं ज्येष्ठाय नमः ओम ह्रीं रौद्रे नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं मीनाक्षं समर्पयामि हर हर महादेव योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् प्रथमान् भवते चन्द्रभावान् पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् प्रथमान् भवते एवं वेद योपामायनं वेद आयनवान् भवते ओम श्री मीनाक्षुतरेश्वराय नमः वेदोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम अग्निमे नीलपुरोहितो यज्ञस्य देवमर्द्विजं होतारं रत्नधातापं हरिः ओं विषेद्भोर्जेत्वा बालवस्था बालवस्थदेवोऽवस्विता प्रार्पयतुश्रेष्ठतमानकर्मणे हरिः ओं ओमज्ञायाय भीतये गृणानो हव्यदातले निहोदारस्य बर्हिषि हरिः ओं ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु भीतये शय्यारभिश्रावन्तु नः हरिः ओं वेदपारायणं समर्पयामि माधव्याख्यास्यामः आरम्भ्रारब्धोत्रं भूत्वा अन्यमानमन्यं प्रीय अध्ययन्वादधाति परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीया ॐ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तनित्यं लोकाः समस्ताः पृथिवी सस्यजालिने वेदालङ्कारहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं अस्य देवदेव सहिताण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सकल जगतां सृष्टिः संहारतो भव अनुग्रहण्यवन्दनस्य
एकं पादः यौः पादः दिशः पादः परोर्जाः पादः बहवै बह्पष्पाले बह्पजाधिकाले बहुव्रीहिजवाले बहुमाटतिलाले बहुहिरण्याले बहुहस्तिकाले बहुदानपुरुषाले रजमच्चै पुष्ट्यमच्चै बहुराजस्कोशाले राजासु तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमः पार्वतीपतये हर हर सुंदरेश्वर स्वामी की प्रणम रामनाय च हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः रक्षाबंधना यज्ञापवेत धारण पूजां करिष्ये இங்கே கட்டுவாங்க மேலே அங்கே போய் கட்டுவாங்க கையில் ஆமாம் We are doing now Rakshabandhana Yajnapavita Dharana Puja. We are doing now. Om Tamam Varnapata Vaspadaya Dhamam Vyamakshamaddushadaya Atha Vayamaditya Bragedavana Gathadujye Syama Andare Khamedava Ivanam Rudhivyasi Tadvishwavapanaani Sambrani Shusheta Nivarnasya Pradani Yacchinte Hurikadhapadeva Varnapradam Neva Sadhya Vidyavi Yatkinchetam Varnadevya Jane Vidroham Ashya Sadamasi Achitte Yatra Dharmaya Manasasmagena Jodi Hariha Vidavaso Vidyadivana Devi Yadvana Satyavadayana Vidma Sarvada Vishedeva Devata Deyasya Varna Priyasa Apadehedu Varnamo Bhairava Yajne Vrimahe Havirvi Shriyanaspabhya Vasara Pradeto Rajannena Kumte Krudat Kudani Satkaya Brahmana
is the boss. You can't do anything.